डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर का। लास्ट क्लास में पोर्टर गवर्नर का हम लोगों ने देखा था कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम। इस क्लास में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम देखने वाले, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। सो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर एक्चुअली वी आर जस्ट, हर गवर्नर के केस में सेम ही होगा, द इक्वेशन बिटवीन एन एंड एफ सी, and again then with respect to r, fc is correlated with r. So spring controlled गवर्नर, ठीक है। इस केस में द fc कंट्रोलिंग फोर्स इज गिवन बाय mr ओमेगा स्क्वायर, द सेम थिंग, और fc इज जो मुझे निकालना है एफ सी डिवाइड बाय आर, दैट इज गिवन बाय एम ओमेगा स्क्वायर। सो एफ सी और आर के बीच में ही हमें कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बनाना है, ठीक है। नाउ कंट्रोलिंग फोर्स इन द केस ऑफ दैट स्प्रिंग कंट्रोल, वी आर जस्ट ड्रॉइंग लाइक एफ सी हियर, एफ सी कंट्रोलिंग फोर्स हियर आर, ठीक है। नाउ थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नर वी कैन सी इन that first, when it passes through 0 O point, and that is your D point, ठीक है। Now one is like that, this case here, that point is A, that point is B, and one is this, that point is E, and that point is F. So there are three curves between FC and R, FC and R. तो जो पहला वाला है दैट ए पॉइंट, और इसको O की जगह आई कैन राइट दिस पॉइंट एज O, नो प्रॉब्लम, दैट पॉइंट इज O. सो वैसे आप इसको C पॉइंट भी दे सकते हैं, A B C D E F भी दे सकते हैं, बट इनिशियली आई ड्रॉ O, तो दैट इज ओके, नथिंग अ इश्यू. So in that case, that is stable governor. When a governor is stable, this curves fit for that. And here the value of FC is AR minus B. AR minus B, a straight line equation. माइनस बी क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव पॉइंट पे कट कर रहा है. So that is the equation for a stable governor. FC equals to AR minus B, and that is stable and that is unstable. Unstable की condition equation is AR plus B, ठीक है, क्योंकि intercept here is the intercept, and that passes from that 0 when there is no intercept, then it is isochronous. We are discussing about isochronous already. Isochronous, that is FC equals to A. So this is the condition for three stable, unstable and isochronous governor in case of spring control governor. So for stable, again I am going to repeat, for a stable governor the relation between FC and R is AR minus B. For isochronous it is AR, and for unstable it is FC A plus R, ठीक है, AR plus B. तो अनस्टेबल मैं यहां क्लियर लिख देता हूं, अगर कोई दिक्कत है. अनस्टेबल देन FC equals to AR plus B. Isochronous, that is FC equals to AR, and stable, that is FC equals to AR minus B. So this is all about what you can use in case of spring control governor. Thank you.